أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now, my dear fellows, students and colleagues, and those who are appearing in the undergraduate examinations or postgraduate examination in the country or outside the country, they should follow these type of lectures, although they are dry lectures or tutorials. But they have to understand the importance of this, because it is an open type of a you can say examination, specifically speaking the fellowship examination or PhD examination or MPhil examination. This is it's an open one. Anybody can ask any question related with the subject. The problem is this. That's why I am taking these very, very dry type of subjects, but they are very important if you can understand it. I have already taken the gram-positive Bacilli, the most important gram-positive Bacilli. Depending on understanding, they are classified into gram-positive Bacilli or gram-negative Bacilli. If they are gram-positive with the gram stain, they appear dark in color, and you can say it is brownish, or you can say they are violet color, something like this. But if they are gram-negative Bacilli, they color reddish, light reddish, or pink, or maroon in color. So they are gram-negative Bacilli. Now, what is the importance of this gram-negative Bacilli are concerned? A very long list of the gram-negative Bacilli are there, although there is a limited list of the gram-positive Bacilli. Now, this lecture is an introductory lecture. I mean to say that I want to talk something why they are so much importance. They are given importance in internal medicine and in other fields of the medicine. Gram-negative Bacilli. Why? The thing is this: there are many genuses and then species and then serotypes of these organisms, and this is very, very broad. You cannot remember anything, and we are not expecting everything from any student. But the question which I want to ask is why they are important, why they are more dangerous, why they are more common. These are my questions. So the list is very, very, I think, is very broad. I already said that. If I remember the list of it, something like this, I can recall like this. Like, for example, you heard about brucellosis, Campylobacter infections, cat scratch disease, cholera, Escherichia coli, the Haemophilus influenzae, Coxiella infections, pertussis, plague, Pseudomonas, Salmonella, shigellosis, tularemia, and typhoid fever, entire group of fevers. Now, these gram-negative bacteria can cause many serious infections. Problem is this, such as pneumonia, such as meningitis, such as peritonitis, such as the urinary tract infection, very common, and the bloodstream infection means they can cause bacteremia, septicemia, pyemia, septic shock, and the quality of these bacteria is that they are increasingly become resistant to the antibiotics. Problem is this: you invent one antibiotic, they become resistant after. So within a decade, they become resistant to that specific antibiotic. They are naturally resistant to certain antibiotics. And penicillins are not effective. For example, they are effective penicillin group of drugs, all the beta-lactams,
They have got action, no problem. That, for example, the monobactams and carbapenems have a very good effect. Third generation of cephalosporins have very significant effect. Although, but problem is they acquire the resistance the passage of the time. Secondly, they acquire genes from the bacteria. They acquire genes from the bacteria that have become resistant. A chain is formed. Resistant bacteria are there. They are helping other bacteria which are not resistant. So it is a herd type of resistance. Herd, you know the HERD, the herd means that it is a collection of the animals in one place, the herd. So this is a very important point regarding this. And lastly, not the least, is that their genes mutate. The genetic structure of these negative bacilli are that they mutate, often they mutate. If there are mutations, it means that they are difficult to form a very powerful vaccine against them. It is difficult. For example, the coronavirus is a very, very highly mutant organism. Many types have been described, the serotypes of the virotypes or serotypes of the coronavirus is concerned. Now, introduction, which is followed, theoretically speaking, they are bacteria that do not retain the crystal violet stain, which is a part of the ground stain used for the bacterial differentiation. They are characterized by their cell wall or cell envelopes. Actually, the quality of the bacteria is the envelope, cell envelope, capsule, which are composed of thin peptidoglycan cell walls sandwiched between an inner cytoplasmic cell membrane and the bacterial outer membrane. The gram-negative bacteria are found in virtually all environments. Now, this is the habitat. On the earth, the soil that supports the life. The gram-negative bacteria include the model organism. Model organism, novel organism, model organism is Escherichia coli, very resistant organism. God forbid, I have treated many infections of Escherichia coli in urinary tract is concerned, as for gastroenteritis is concerned. But this is very resistant organism because of the qualities which I already described, as well as the other pathogenic bacteria like Pseudomonas aeruginosus is a killing organism, Filmaria trachomatis, a very penetrative organism, and Yersinia pestis, which is definitely a very horrible organism. One student asked me that why you are wasting time. Previously said, I already said, Yersinia pestis causes what? That is plague. He said, you have seen plague? I said, no. Your teacher, whatever your any supervisor is concerned, I said, probably he has seen cases of plague. Probably, I don't know. I never asked him. But his supervisor has seen. And his supervisor, then his supervisor, have seen the outbreaks of the plague. And plague is a very horrible type of organism. Very horrible. If it occurs, for example, let's see, God forbid, they are the sins of the people resulting in these type of the problems. Yersinia pestis, coronavirus, and other organisms. And that is the makafat amal, what we call it. You can not only understand this terminology, it's a very big terminology. Makafat amal. Makafat, of course, what you have actually dig a hole for the plant will come out. They are the result of your properties we have embedded in and then they flourish up as what is called the results in this world. We see the consequences. They are called the amal, which are seen in
they are the result of the amal. Makafat e amal. Yersinia pestis is the organism which have, but you always remember it is pandemic organism. If it occurs in a sub-epidemic, it will go for the endemic and then epidemic, and then it will crossing the other continents and then become pandemic. Like for example, coronavirus. There are significant medical challenges as their outer membrane protects them from many antibiotics, including the penicillin group of antibiotics. Also detergents that would normally damage the inner cell membrane and lysozyme. They are very resistant. So the antiseptics you are using are usually failed, and you give them orally or parenterally also. They have become resistant. The capsules are there. The outer membrane will resist the action. An antimicrobial enzyme produced by the animals that forms a part of the innate immunity system. Also, they are resistant to them. Although the humoral immune system is activated, as well as the cellular activity is there, immunity, but they are failed to do it. And in this fashion, the disease is progressive. And this is the Makafati amal. Now, additionally, the outer leaflet of the membrane comprises a complex liposaccharide. Now, LPS, whose lipid A content can cause a toxic reaction when the bacteria are lysed by the immune cells. Now, if they are immune cells, means that macrophages or the phagocytes, they engulf it. So they are engulfing the poison actually, because the lipid A component will lyse them, destroy them. In fact, they are going for the fight. They become shaheed afterwards. It means that your immune cells, they fight against the infection, but they definitely lyse and destroy. Now, this reaction may lead to the low blood pressure. Of course, you see the reaction, the inflammatory reaction, how it is going on against the bacteria. Bacteremia, and then the septicemia, and then pyemia, then SIRS, sepsis, septic shock, and going for the MODS, etc. Now, blood pressure will be lower, respiratory failure, there will be ARDS, reduced oxygen delivery to the part, and because of the destruction and because of the neurobasis, at that part, lactic acidosis will a leading cause, and then in the manifestation of the septic shock. The challenging organisms there, it means that. These are the picture of a gram-negative bacilli. Look, they are in the colonies in the low power microscope. The 10 micrometer, and it is very, very significantly bacilli and purplish color. On one side of the slide, they are aggregated, and they seem to be moved from one place to the other. And what are the characteristic features? My story is this, that why they are so much important and why they are so much novel agent. The conventional gram-negative, that is lipopolysaccharide biodome bacteria, display three characteristic features. An inner cell membrane is present, that is called cytoplasmic membrane. Number two, a thin peptidoglycan layer is present. This is much thicker in the gram-positive bacteria, although it is present also, but very thin. That is why they are stained well with the crystal violet. But here it is not, crystal violet will not be attained. And in fact, the other agent will cause the purplish color. That is why. Has outer membrane containing the lipopolysaccharide, which consists of, here it is the poison. A lipid core, A core polysaccharide and O antigen in its outer leaflet, and phospholipid in the inner leaflet. There are two leaflets in the outer membrane capsule. And they are very, very dangerous thing. Items
and they are fighting the immune cells, and the victory is not the macrophages or cellular immunity, but it is the failure of the cellular immunity that they die. Because the lines of defense is gone. And your only choice is this, that you will form the humoral antibodies which can fight against them, but they are not very effective against, because they are mutated also. चालाक किस्म का जो है ना ऑर्गेनिज्म है, बहुत चालाक है, फौरन जो है ना अपनी साख्त को, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज कर देगा, तो वो जो ह्यूमरल एंटीबॉडीज बनाई हैं आपने, दे आर नॉट इफेक्टिव देन. The porins exist in the outer membrane which act like a pores for the particular matter. The outer membrane means this is a capsule which I am saying. There are certainly a very pinprick type of things in the membrane, and it can break it out and form the endotoxin then. If the part is detached, it is called endotoxin, and it is called the endotoxemia if it comes in the blood. And then endotoxemia will definitely cause all of the problems clinically, the fever, the chills, etc. Now, between the outer membrane and the cytoplasmic membrane, there is a space filled with a considered gel-like substance called the periplasm. This is a periplasm. The S layer is directly attached to the outer membrane rather than to the peptidoglycans. And if present, the flagella have 4 supporting rings instead of 2, because these are present also in the gram-positive bacilli, but there are 4 pair rings, 4 instead of 2. The more mortality can be achieved. Antichoic acids or the lipochoic acids are present. Now, these are the acids which are very important in the penetration and destruction of the tissues. Lipoproteins are attached to the polysaccharide backbone. Now, the backbone of these organisms are the lipoproteins. Some contain the bronze lipoprotein, which serves as a link between the outer membrane and the peptidoglycan chain by a covalent bonding. Now, how these membranes, this membrane means the discussion is very long. There is the inner membrane and the outer membrane, the capsule, and if it is detached, then it becomes endotoxin and endotoxemia. That's why I am actually guiding you in the proper thing. Why they are so much novel agent or a destructive agent? Why? Now, most of the few exceptions do not form. The few exceptions do not form. Most are non-sporulated, but there are few organisms which form spores, and instead of the gram-positive bacilli which usually form the spores. Now, this is the structure which is of gram-negative cell wall. This is the capsule there, and there are the cytoplasmic membrane inner and outer, and there is periplasm inside. There is flagella. There may be 4 flagella may be present, and there will be small pits are seen in this capsule, and they are connecting inside. That is, I have already told you, an inclusion body or ribosome are present here, no nucleus. Now, this is the highly powered microscopic structure of this thing. These are the pores, the channels we can say, communicating from the capsule. And this is the outer part, the capsulated part. Now, look the structure of the proteins lying here, and then the peptidoglycans inside, and there is an inner membrane, there is periplasm inside here in this, and there are many substances in the periplasmic space which are important for the pathogenicity of the organism. So these are the organisms
which are important regarding this gram-negative Bacilli is concerned. I said that name them. Gram-positive Bacilli people are difficult to remember. What we will do in the next tutorials, that take one by one these organisms. It will take a long time, although it is a boring and dry type of a thing, but you have to study them. Otherwise, if somebody put a question in front of you, you will be definitely nowhere. I will repeat it again. First of all, I want to take the salmonella, which are very, very common problem, salmonellosis, and I'm going for the Shigella. Then I will discuss Brucellosis, because very related subject. Then Campylobacter infections. Then Escherichia coli, influenza, Bacilli, Marxella, Legionnaires disease, pertussis, cholera, plague, Pseudomonas proteus infections, Tularemia. These are the discussions. And then spirochetes will come, Mycoplasmas and Schmaldial infections. So it is a very, very topic is a big one. I already said that. But you have to tolerate it. You have to study it. For example, I know my very, very good student of my class fellow is in 1978. He was a good student, very good student. But what he was doing is that he selected the part of study rather than going because at that time the questions which were asked in the Viva or in the year, for example in 1977, those questions is not asked re-again. Usually it is, आपको इसी तरह ही होता है, जब आ जाता है वो तो फिर 78 में अगर आ गया तो 79 में वो नहीं आएगा. उसने जो है ना सारा पढ़ लिया, उसको पता था कि इसके बाद जो दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग जो आएगी वो दूसरे पैरासाइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ लेना चाहिए. तो उसने ज़ाहिर है कि दूसरे टॉक्सोप्लाज्मा है, दूसरी चीज़ें पढ़ ली. In pathology examination, the professor of pathology, very famous person, asked him about the malaria. मलेरिया की जीनस क्या है, उसकी सारी वैरायटी बताओ, उसकी कितनी जो है वो स्पीशीज़ होती हैं, उसके बारे में डिस्कशन करें और उसकी पैथोजेनिसिटी वगैरह बताएं. ये ओरल हो रहा था, वाइवा हो रहा था. उसने कहा कि सर मैंने मलेरिया नहीं पढ़ा, बाकी चीज़ें आगे पीछे पढ़ लेनी, क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है पिछले साल, बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया. तो वो हिल गए अपनी जगह से, कुर्सी से चीख मार के. यकीन करें इसी तरह हुआ था. जो बार्बर में एग्जामिनर था वो ड्रॉजी था, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर था, वो मौका देना चाहता है इंटरनल को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर ले, ताकि वो तो देखता है एक्टिविटी को कि भाई स्टूडेंट आता है नहीं आता है, वो रखता है रिजर्व अपने आप को ना. उन्हें चीख मार के उठे तो बराबर में उन्होंने हिलाया उनको कहा कि उठे उठे देखें ये क्या बोल रहा है. उन्होंने कहा क्या हो गया साईं? बोला ये कह रहा मलेरिया नहीं है पड़ा, मलेरिया नहीं आता. तो मैं क्या करूँगा, मुझे बताएं. तो उन्होंने कहा नहीं आप कूल डाउन हो, मैं इससे पुरानी बातें निकालता हूँ. तो उन्होंने सवाल किया कि ये बताओ कि मलेरिया जो है वो क्या चीज़ होती है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, क्या होता है. इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसने एक्सटर्नल ने उसको याद दहानी कराई पुरानी चीज़ों से ना, लेकिन वो थोड़ी सी बता सका, थोड़ी नहीं बता सका. ये नहीं है कि इस बुनियाद के ऊपर उसको फेल कर दिया जाता, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो उसको अचीव करना चाहिए था ना गोल को, वो नहीं अचीव कर सका. अब उसने छोड़ दिया था कि इस पर तो कोई बात ही नहीं करेगा, कि इतनी बात पहले हो चुकी है तो अब क्या करेगा इस पर. तो एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड, इसको आप अनइम्पोर्टेंट ना समझिए. मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो डिजीज़ हैं वायरल इन्फेक्शंस में, बहुत से लोग वायरसेस वगैरह को स्टडी नहीं करते, इस तरह से प्लांट्स को नहीं स्टडी करते. वो जो
फॉरेन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, दोज पीपल हु आर अपियरिंग द फॉरेन एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली स्पीकिंग, तो वो जो है बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो फंदे में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए ये डिजीज़ को स्टडी तो करना पड़ेगा, उसके बगैर इन्फेक्शन एंड डिजीज़ जो हो रही है इन्फेक्शनोलॉजी वो कंप्लीट नहीं होगी। और आपको पैरासाइट भी पढ़ने पड़ेंगे इसमें, और आपको फंजाई भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं, इतने हाई लेवल पर आती हैं, लेकिन शुद्ध बोध है उसका, अगर जानते हैं ये क्या होता है, एंडोटॉक्सीमिया किस में इम्पोर्टेंट है, एक्सोटॉक्सीमिया किस में इम्पोर्टेंट है। अब इस किस्म की चीज़ें जो है ना, मतलब ये जनरल एक आपको पहले मैं बताता चला जा रहा हूँ, एंडोटॉक्सीमिया ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सोटॉक्सीमिया जो है ज़्यादातर जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके म्यूटेशन इनमें नहीं होता, इसमें म्यूटेशन होता है। इसके अंदर कैप्सूल जो होता है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है और स्पेसिफिक उसका वर्क है। तो लिहाजा ये जो है ना सेलुलर इम्यूनिटी को तो बिल्कुल ही समझना है कि उसके लिए बिल्कुल बेकार है, वो उसको बर्बाद कर देगा, उसको शहीद कर देगा। ग्राम पॉजिटिव भेज रहेगा फिर भी ये है कि वो बाकायदा जंग होती है, उसके दरमियान चांसेस होते हैं कि सेलुलर इम्यूनिटी कुछ काम कर जाए। यहाँ पे तो बिल्कुल ही काम नहीं करती। अब ये इसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपके पास जो रह जाती है चीज़, ह्यूमरल सिस्टम ऑफ एंटीबॉडीज रह जाती हैं, वो बन रही होती हैं बराबर, IgG जिसे आप कहते हैं, वो कुछ फाइट करके उससे लिमिट करती है इन्फेक्शन को, लेकिन उतनी कामयाब नहीं हो पाती। अक्सर इसी तरह होता है कि सेल वॉल वो जब एक्ट पे आती हैं तो जो कैप्सूल है और आउटर मेम्ब्रेन टूट जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, एंडोटॉक्सीमिया में चला जाता है पेशेंट। वहाँ जब वो एंडोटॉक्सीमिया में चला जाता है, जहाँ जहाँ भी वो एंडोटॉक्सिन पहुँचेगा वो अपना खुद पैथोजेनेटिक प्रोसेस एक होता है स्पेसिफिक, वो प्रोड्यूस कर देगा। इसको मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी कि इन्फिनिटी ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ता है और एंड कहाँ हो जाता है इसका। एंड में आने के बाद वो जो होता है ना, फिर वो खात्मा बिलखैर हो जाता है। वो एंड आके एक बात जो वही आ जाती है जो मैंने आपको डेथ पाथ बताई थी, कि वो आखिरी में आने के बाद जो है ना वो साइनोइड नोड जो होता है डिसफंक्शन में चला जाता है, और सुपरा वेंट्रिकुलर एरिया जो होता है वो एक्शन में आता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर एरिया एक्शन में आता है, डिसरिथमियास होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर ये एंड होती है डेथ पाथ पर, एंड दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट। तो कॉज ऑफ डेथ लिखने वाले लिख रहा होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। अब उसकी बिहाइंड क्या पैथोलॉजी है उसमें एक जुमला भी लिख दिया अगर तो बड़ी बात है, मतलब उसमें तो वो कामयाब नहीं होता। प्राइमरी जो है यानी उसकी कॉज उसको लिखनी थी, यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था कि इसको गायनेकोलॉजी की मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम हुआ है, और गायनेकोलॉजिकल जो भी इलनेस थी उसने जो है वो ग्राम नेगेटिव बिजनेस को जनरेट किया है, प्रोबेबली एरिया कोलाई या प्रोटीज सुडोमोनास, उससे जो एंडोटॉक्सीमिया में जाया पेशेंट, उसने जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को दिया है, इसने जो है ना सबसे शॉक में चला गया पेशेंट, इरिवर्सिबल शॉक में चला गया, फेज 2 में चला गया, उससे निकालना मुश्किल हो रहा था, तो ARDs में गया और DIC में जाके डेथ हो गई, डेथ पाथ में आ गया। ये तो सही है जवाब इसका, लेकिन इस तरह से जो डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं लोग ये गलत बताते हैं, इस तरह नहीं बनाते हैं उसको। अगर ये बाहर कोई ले गया मुल्क से तो वो तो हंसेंगे आपके ऊपर, तो क्या लिख रही है। हम हैरान होंगे कि कॉज ऑफ डेथ मैंने जो पढ़ी है लिखी हुई, लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ नेचुरल डेथ। व्हाट इज नेचुरल डेथ? तो होती ही नहीं। नेचुरल डेथ का मतलब कोई ना कोई बिहाइंड पैथोलॉजी तो होती है, वो हो जाती है, अल्लाह पाक उसे क्रिएट करता है। तो बड़े बड़े जो है ना जो लोग हैं दुनिया में जिनके आप नाम लेते हैं, उनके पीछे पैथोलॉजी थी, उसके बाद डेथ हुई है। यहाँ तक कि वो इंसान जो सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ तरीन है, आप तस्वीर करें उसकी, आप जो अज़मत का तस्वीर ही नहीं कर सकते, तो उनके साथ भी इस तरह वो बीमार हुए हैं और इस तरह से वो लेते हैं, 2-3 दिन 4 दिन लेते हैं। उनको पता था कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, ही न्यू अबाउट दिस थिंग। और उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली जो था वो ज़ाहिर है कि पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया। हर एक के साथ इसी तरह होना है, कुछ ना कुछ जो है ना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होगा, कुछ हुआ होगा, किसी भी शक्ल में हुआ, वो छोड़ दें बात इस बात। एंड रिजल्ट ये हुआ, वो डेथ पाथ पे आएगा और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट में जाएगा और इस तरह से ख़त्म बिलखैर हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें अभी डिस्कस दायरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जो कुछ हो चुका उसको छोड़ दो, मत दोहराओ नहीं उसे। हम इसी नीयत से नहीं दोहराते हैं,
लेकिन हम अपने साथियों के साथ मिल के जो है ना, क्योंकि नॉलेज बढ़ानी होती है हमें, तो हम जो इसी नहीं है जो है ना डेथ जो मीटिंग होती हैं जब हो जाती हैं, जिनको आप मोर्टेलिटी मीटिंग कहते हैं, सुबह के टाइम होती हैं, ये हफ्ते में होती हैं या 2 हफ्ते में होती हैं, होनी चाहिए वैसे। तो वो जो है ये बताते हैं कि हम में तो खामी नहीं थी कोई दुनियावी नॉलेज के लिहाज से कि जिसकी वजह से डेथ हो गई, ताकि आइंदा ख्याल रखा जाए ना। इसका मकसद ये होता है, और कोई मकसद नहीं होता। किसी को कोई क्लेम नहीं कर रहा, किसी वीकनेस नहीं बता रहा। तो इसलिए जो है ना आपसे माजरत के साथ कि जब भी आप डेथ सर्टिफिकेट बनाएं तो प्रॉपरली नोट डालें। और जिस मौजूद पे बात हो रही है अभी, यही बहुत मुसीबत वाली चीज़ है कि हाई मोर्टेलिटी है बहुत ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बिजनेस की। तो हम एक एक करके उसको बताना शुरू करते हैं और साल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इसको एंड कहाँ पे करेंगे ये हमें खुद भी नहीं पता। Probably it will take 1.5 or 2 months, I don't know, comprising about 50, 60, 70 tutorials on this subject. एक तो आपको ये बताना था इस वीडियो में। दूसरी बात ये थी कि देयर आर स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन दी फेलोशिप एग्जामिनेशन और MCPS एग्जामिनेशन, मेंबरशिप एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, और दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू गेन नॉलेज। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कम्युनिकेट किया, मुझसे कहा कि हमें कुछ टीच करें। तो टीचिंग वीचिंग नहीं होती कोई भी आजकल। टीचिंग तो वो होती है जो आप खुद करते हैं। हम गाइडलाइनर्स होते हैं, हम प्रमोट करते हैं। आपकी जो वीकनेस है उसको निकालने के लिए हम टूल्स इस्तेमाल करके उसको निकाल देते हैं और इस तरह आपके लिए वो आसान बनाते हैं। तो हमारा ख्याल ये था कि चलो ठीक है, इसमें ऑनलाइन जो है ना इसको कर देते हैं, लेकिन जो हाजिरी हो हमारे पास कम से कम 2 या 3 आदमी हों ताकि वो सवाल जवाब कर सकें। कि मैं तो अथॉरिटी तो नहीं हूँ, ज़ाहिर है मुझे सवाल तो करने पड़ेंगे ना कि भाई आप ये जो चीज़ बता रहे हैं इसमें ये लूप होल्स हैं, ये गलती हो गई है आपसे वगैरह, कोई तो कोई बताए ताकि मैं अपनी नॉलेज में भी कुछ इजाफा हो जाए। तो इसलिए जो है ना ये जब किया जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो इसमें शामिल होना चाहें तो वो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। और ऑनलाइन सेशन होंगे ये, तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं ये। असल अंडर ग्रेजुएट वाले का चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। तो ओपन है, कोई फ्री है, इसमें किसी का कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर जस्ट डिलीवर नॉलेज अगर है मेरे पास तो मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ। तो उसको हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है। जो कमिंग रमज़ान भी है, आपकी मसरूफियात हैं चेंज हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद ये सिलसिला ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो मैं रमज़ान से पहले 1-2 मीटिंग करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर रमज़ान। ये एक अलग सीरीज़ है, इसमें केस डिस्कशन है एक्चुअली। यानी जो अगर मेडिसिन कोई सीखना चाहता है तो वो केस डिस्कशन से उसको हासिल हो सकती है। जैसे हमारे पास एक्चुअल जो केस आते हैं ना, जैसे वो जो अफराद आएंगे यहाँ पे वो अपना केस लेके आएंगे, हमें बताएंगे क्या हुआ क्या था, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर आप सुने उसको कि हमने किस तरह से उसको समझाया, हमने कैसे वहाँ तक पहुँची। तो ये ही आर्ट ऑफ मेडिसिन है। अगर पढ़ना चाहता है केस डिस्कशन, उसके बैक नॉलेज जो है थ्योरी है या डेविडसन है या हैरिसन है या करंट मेडिकल है, वो एक चीज़ अलग है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। और 1-2 सेशन हम कोशिश करेंगे रमज़ान से पहले ले लें और फिर रमज़ान के बाद जो है ना इसको जारी रखें। हफ्ते में 1 या 2 दिन जारी रखेंगे। जो आना चाहे, मैं रेसिडेंस में मेरे पास स्टूडियो है मेरा, यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ मैं इसको, तो आप ऑल आर वेलकम, जो आना चाहे ज़रूर है। और जो अगर नहीं आना चाहता तो ऑनलाइन चूँकि चलेगा, तो ऑनलाइन आप जो है ना उसको देखेंगे और वो रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर वो ज़ाहिर है उस पर यूट्यूब पे चला जाएगा बाद में। वो तो ठीक है, वो तो जाएगा। तो इनका इंतज़ार कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आई होप कि वो बेनिफिशियल होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।